Alright, so there you see a high voltage drama in the national capital as AAP continues to stage protest despite the police issuing a warning, and several of those AAP leaders including Sanjay Singh and Gopal Rai having been detained by the Delhi police as we speak. Meanwhile, it's a new low, as you can see several of those AAP workers using those vile abuses against the Prime Minister and the arm, meanwhile the Delhi police trying to contain the situation and trying to detain several of those AAP workers. Alright, so the visuals there on your screens right now are coming from the national capital, where you see a dharna there being staged by the AAP workers. This even as Section 144 has been imposed in several areas in the national capital in view of the protests being staged. In view of the protests being staged by several of those AAP workers. The visuals there on your screens right now, where you can see several of those AAP workers being dragged and taken into custody, being detained by the Delhi police as we speak. Of course, this in the backdrop of the grilling which is underway of the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. In fact, let's cut across to the briefing by the BJP taking place at this point. वह देख पा रहे हैं और आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, इनका जिस प्रकार से ड्रामेटिक पॉलिटिक्स है, नौटंकी से भरा हुआ राजनीति है, वह भी आज हम टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। दोनों विषयों को आपके सामने रखूंगा। पहले आदरणीय राहुल जी, जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के अधिवेशन को देखा है, कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाषण की श्रृंखलाएं चल रही हैं, द स्ट्रिंग ऑफ स्पीचेस इन द कांग्रेस प्लेनरी, ऐसा प्रतीत होता है मानो हिंदुस्तान डूब चुका है।
ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कायर है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। एक तरफ पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कहने में और ब्राइट स्पॉट मानने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे पीछे है, हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो गया है, इस प्रकार के विषयों को स्पीचेस में रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के विषय में कहा है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एक्नॉलेज्ड व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज अचीव्ड। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे, आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। राहुल गांधी जी ने आज अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में कहा कि टेररिस्ट इन्फेस्टेड पुलवामा एंड टेररिस्ट इन्फेस्टेड प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर, अनंतनाग एक्सेट्रा, वहां पर आज मैंने तिरंगा देखा। प्रश्न उठता है, किसके कारण टेररिज्म वहां पनपा? What was the reason as to why? What was the policy as to why we had terrorism in these areas which Rahul Gandhi today acknowledged were terrorist infested areas? And what were the reason as to why these areas today are peaceful? These areas show unity. These areas bring about development. And that's the reason as to why people have taken up Tiranga. आज अगर लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया हुआ है, अगर लाल चौक में तिरंगा है, इसके पीछे का कारण सुशासन जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, वह है। आज जम्मू कश्मीर के विषय में बोलते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल चौक में गए थे झंडा फहराने के लिए। बिल्कुल सही कहा। 1992 में जब आपकी सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री जी झंडा फहराने गए थे, सक्सेसफुली उन्होंने झंडा फहराया था। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद लाल चौक में झंडा फहराया था, और उसी समय संकल्प लिया था कि भविष्य में हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां हम धड़ल्ले से तिरंगा न फहरा सके। और शायद इसी अनुभूति के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को भी अंजाम दिया, और जम्मू कश्मीर में हमने लाखों तिरंगे हर घर तिरंगे के अंतर्गत देखा, और वही राहुल गांधी जी की भी अनुभूति रही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने धन्यवाद दिया है टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। चाइना के विषय में राहुल गांधी जी ने कहा, मुझे तो आश्चर्य लगता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कमजोर देशों को मारना और शक्तिशाली देशों के आगे झुक जाना। The first clarification that भारतीय जनता पार्टी would demand out of कांग्रेस पार्टी is, ये कमजोर देश ऐसे कौन है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार रही है? क्या वो पाकिस्तान को कमजोर देश मानते हैं? It's a terrorist state. Pakistan had sent terrorists to India, unleashed mayhem in India. पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारतवर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया, और जम्मू कश्मीर में अशांत वातावरण पैदा करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो पाकिस्तान है।
इसलिए यह कहना कि कमजोर देशों को मारना, यह मानसिकता दिखाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कि क्या कारण रहा है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने पीछे भी इन द यस्टर मंथ्स एंड इयर्स उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा था और आज भी कहा कि कमजोर देशों को मारना। और जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने AK एंटोनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में अपने वक्तव्य, अपने स्पीच के दौरान देखा था। 2013 में जब AK एंटोनी ने बतौर रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर अपने स्पीच को रखा था, तो आप देख सकते हैं आज भी इंटरनेट पे, आज भी लोग गूगल में ये मौजूद है। AK एंटोनी कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। For 70 long years, the policy of India had been underdeveloped border are the safest places because China is powerful. चाइना को भारत में डेवलप्ड बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए 70 वर्षों तक हमने अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं किया। उसे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days or the earliest. You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, और चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi जी of Indian heritage, जी born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ। अरे एक्सीलेंट और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान। मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा। We told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage.
Anarchy in Punjab, story broken on Republic. आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। I don't pay taxes to see these uncouth politicians send this image of Indian democracy. I don't pay taxes so they can have 45 non-stop minutes of a bloody battle. I don't pay taxes so they can kick, punch, attack, throw, and they can pin each other down and tear each other's hair. No, I don't pay taxes to hear them abuse and use the most ugly and dirty abuse at each other as they turn an elected house to a battle pitch. I don't pay taxes and you don't pay taxes. They knew what India is. They knew the sentiment of India. राहुल जी, आप इंडिया को, भारत को जानने से पहले आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। यही परेशानी है। राहुल जी को बचपन से लगता था कि ये जितने घरों में वो रहते थे, ये सारे घर उनके थे, ये सारी गाड़ियां उनकी थी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। यही तो एंटाइटलमेंट है। जब आपको सरकारी प्रॉपर्टी, जब आपको हिंदुस्तान के सरकार का घर अपना घर लगने लगे, आपको लगने लगे कि यही तो मेरा घर है, हमें कौन निकाल सकता है, तब उसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। और अंत में राहुल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान आज एक उभरता हुआ सितारा है। इंडिया टुडे इज अ ब्राइट स्पॉट। आप कितना भी नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास करें, द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इंडिया हैज। आज विश्व जानता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है। इसलिए आपको भारत के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace,
can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army? They just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything, and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political. से पूछा है, उन प्रश्नों का उत्तर आप सटीक रूप में सीबीआई को देंगे ये हम आशा करते हैं, क्योंकि ये उत्तर ऐसे हैं कि आप कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो जाएंगे। आपने हमें नहीं बताया, मगर ये उत्तर आप सीबीआई को बंद दरवाजे के अंदर देंगे ये आशा हम करते हैं। और आज मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही घृणक है, बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरा कब्र खुदेगा, अभी मैं टीवी पे देख के आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले नारे दे रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये किस प्रकार का भाषा है? अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग करने से सच्चाई छुप जाएगी? आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मर जा मोदी। ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये भाषा उचित नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, आजकल राहुल गांधी जी में तपस्वी बनने का एक शौक है, बीच बीच में उनको शौक आता है, खाट यात्रा करना, लॉन्च होने के नए नए तरीके हैं। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, किसने कहा घर नहीं है गाड़ी नहीं? 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में गबन करने के जुर्म में आज बेल पे सोनिया जी और राहुल जी दोनों बाहर हैं। और 5,000 करोड़ रुपए ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं, ये बहुत बड़ा रकम होता है। और कोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है। और सरकारी घरों को अपना घर मानकर उस पर बैठ जाना, यह भी आज राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ। Excellent. और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान लाल मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा, जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है,
चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना, तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई? We told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? I don't pay taxes to see these uncouth politicians send this image of Indian democracy. I don't pay
pay taxes so they can have 45 non-stop minutes of a bloody battle. I don't pay taxes so they can kick, punch, attack, throw, and they can pin each other down and tear each other's hair. No, I don't pay taxes to hear them abuse and use the most ugly and dirty abuse at each other as they turn an elected house to a battle pitch. I don't pay taxes and you don't pay taxes so they can tear each other's clothes. I don't pay taxes to see this happen. If even tonight, after what I just showed you and what I'm about to show you, if after tonight you remain quiet, then you and me and all of us will deserve this maniacal expression of democracy. We need to tell the Neta how disgusted we are and that in the name of no movement, no right or left wing so-called ideology can you justify this. Republic will only and only be on the side of the people and we will be against the Netas when that happens. So the Netas are on notice and the Netas have a choice. Sack, apologize or face the legitimate anger of the people of India. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का Thanks for tuning in this Sunday afternoon. Let's begin with Superfast 50. Prime Minister Modi shared his thoughts with the people of the country in the Mann Ki Baat address today. It was the 98th episode of the monthly radio program. Highlighting country's digital strides, Prime Minister Modi, while addressing the country by the Mann Ki Baat program, said that many countries of the world are drawn to India's UPI. The Prime Minister remarked that the UPI system is a shining example of the power of digital India. तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। Meanwhile, the CBI began its second round of questioning of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the Delhi excise policy scam case. Sisodia arrived at the heavily barricaded CBI office after paying homage at the Rajghat. Meanwhile, Section 144 has been imposed around the CBI office to ensure law and order is maintained. Meanwhile, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia said that he would fully cooperate with the CBI in its probe in the excise policy scam, saying that his arrest was imminent, and also added that these are false allegations being made against him by the centre. आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। Meanwhile, Aam Aadmi Party, ahead of Manish Sisodia's questioning by the CBI, said that the AAP is prepared for the next 8 to 9 months, speculating that if Sisodia gets arrested, it would be for a long time. वो तो कह रहे हैं पिछली बार भी गिरफ्तारी की बात आप कह रहे थे, आप माहौल बना रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार नहीं हुए और लोग हमारे गिरफ्तार नहीं की पिछली बार गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, तो उस वक्त सरकार डर गई थी। अब देखते हैं अब सरकार के अंदर क्या है। Meanwhile, AAP stayed firm on its stand that they are honest and have nothing to fear or hide. BJP leader Sambit Patra, meanwhile, alleged AAP of hiding the truth and said that converting corruption into event management will not help them to hide corruption.
जब से ये एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने किया है, तब से हमने देखा है हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। Addressing a press briefing, the Aam Aadmi Party leader Atishi said that the AAP is not going to be afraid and is not afraid of going behind bars, further adding that the Aam Aadmi Party are followers of Bhagat Singh and that they are ready to take everything in their stride. देखिए, जो खुद भ्रष्टाचारी होते हैं, जो खुद गलत काम करते हैं, उनको जेल जाने से डर लगता है। मनीष सिसोदिया जी जैसे सत्य के सिपाही अपने सर पर कफन बांध कर जेल जाते हैं, मुस्कुराते हुए जेल जाते हैं, भगत सिंह को याद करते हुए जेल जाते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसीज CBI, ED, दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता। Meanwhile, BJP hit out at the Aam Aadmi Party and alleged the Aam Aadmi Party of playing a victim card. BJP spokesperson said that the AAP is using Bhagat Singh and Gandhi's name that would not help them in any way and that their corruption would be exposed. हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम इस्तेमाल करना, और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अगर आप इतने मासूम हैं तो सहयोग कीजिए। परंतु जिस प्रकार से बार बार ये विक्टिमहुड कार्ड खेला जाता है, आज तक सत्येंद्र जैन को राहत कोर्ट से नहीं मिली है। क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? As Manish Sisodia's grilling continues for over 3 hours now, the Aam Aadmi Party workers raised slogans against Prime Minister Narendra Modi and insulted the Prime Minister by using those derogatory words against the Prime Minister. Amid CBI questioning Manish Sisodia in connection with the liquor scam case, the Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh and other party workers were also detained by the Delhi police for protesting outside the CBI office as Section 144 remains imposed in the area. And in yet another targeted killing that has happened in J&K, a 40-year-old Kashmiri Pandit working as a security guard for an ATM was killed by suspected terrorists in Pulwama today. The person has been identified as Sanjay Sharma, who succumbed to the injuries. आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पर पेश हुआ, जहाँ पर कि टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस, उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। Meanwhile, condemning the terror attack, former J&K Deputy Chief Minister and BJP leader Kavinder Gupta stated that terror groups do not want normalcy in J&K, further adding that those behind the attack will be neutralized. ऐसा नहीं कि सुरक्षा बलों ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने से चिंता एक बढ़ती है। पहले से ही कश्मीरी पंडित समाज इस पर रोष बार बार व्यक्त कर रहा है और जो लोग वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, वो भी आज सड़कों पर हैं। तो मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लिया भी जाएगा और जल्द से इस पर एक्शन लिया जाएगा, उन लोगों को मार गिराया जाएगा। Meanwhile, Ashwini Handa blamed the poor security for the targeted killing which happened, adding that the LG administration has failed to provide security to the minority community in Kashmir once again. जिस तरह से सरकार द्वारा दबाव बनाया गया कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के ऊपर,
कि वह कश्मीर जाएं और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। और आज जिस तरह से कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है कश्मीर के अंदर, पुलवामा में संजय शर्मा को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है और उनकी शहादत हो गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसी आतंकी हमले की निंदा करते हैं। Meanwhile, the J&K Congress committee strongly condemned the targeted killing of Sanjay Sharma, terming the incident a heart-wrenching and cowardly act, further demanding exemplary punishment against the perpetrators of the targeted killing. Another conspiracy to send arms and heroin to Pakistan was foiled as the soldiers of 113 Battalion saw the movement of the drone in the wee hours of Saturday night in the area which comes under the Gurdaspur sector of Punjab. Meanwhile, Instagram account of Waris Punjab Day head Amritpal Singh was restricted on Saturday. An associate of Amritpal claimed that the account has been suspended. In fact, his supporters claim that his Instagram account was blocked due to Thursday's siege of the Ajnala police station by Amritpal and his followers. With reference to the Ajnala incident, former Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh on Sunday said that if the Aam Aadmi Party cannot handle law and order, the centre must intervene to deal with the situation. The former Punjab Chief Minister said that Chief Minister Bhagwant Mann is not interested in what's going on in Punjab and is afraid of taking a firm step. घुटने टेक दिए या वो मेरा ख्याल वो घबराता है कुछ कदम उठाने पर, कुछ तो हो रहा है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ऐसे चल नहीं सकती जिस तरीके से ये चल। Meanwhile, the CPIM Rajya Sabha MP Siva Dasan has now written a letter to Union External Affairs Minister S. Jaishankar expressing concern over the rustification and expulsion of students from the South Asian University. The DRDO officer identified as Balram De was arrested over allegations of sharing secret defense information with a Pakistani woman spy. Now has been remanded to police custody for 4 days. In yet another episode of stone pelting that was reported, Vande Bharat Express was targeted with stones at the Cantonment railway station in Bengaluru on Saturday. The Vande Bharat Express was travelling between Chennai to Mysore. And in more news coming in, Prime Minister Modi is all set to visit Karnataka and inaugurate an airport in Shivamoga and several other development projects. This as Karnataka heads for polls in the next few months. The Prime Minister will also take a walk and inspect the newly built airport, after which the Prime Minister is all set to inaugurate and lay foundation of multiple projects in Shivamoga. Union Home Minister Amit Shah, meanwhile, will take part at an event to mark the 284th birth anniversary of Sant Maharaj, the revered reformer and preacher of the Banjara community in the national capital. The birth anniversary of the revered preacher was marked on 15th of February. In latest development in Sukesh Chandrasekhar case, the Delhi's Patiala House Court on Saturday reserved its order on the bail plea of Pinky Irani. The Delhi court stated that it would hear the matter on 4th of March. Meanwhile, an 8-year-old child was killed and 14 others were sustained injuries after a car rammed into a crowd during Bhagat Katha in a village of Sitapur district in UP. ड्राइवर रजनीश जो शराब के नशे में था, गाड़ी उसके हाथ से स्टार्ट हो गई और वो समझ नहीं पाया, गाड़ी तेजी में आगे बढ़ गई जो भीड़ में जाके घुस गई। उसमें एक 8 महीने का बच्चा जिसकी डेथ हो गई है दुर्घटना में और 14 व्यक्ति और महिलाएं उसमें घायल हो गए हैं, जिसमें से एक महिला की स्थिति थोड़ी नाजुक है। उसको लोगों ने CSC से रेफर कराया हुआ है ट्रॉमा सेंटर लखनऊ, जहाँ पर उसका हालत ठीक है। शेष जो घायल हुए थे उनकी स्थिति काफ़ी ठीक है और उसमें से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। Medical Education Minister Vishwas Kailash Sarang's car met with an accident. According to sources, the accident happened while returning from a late night. In fact, happened when the car collided with the divider late night. The minister narrowly escaped the accident. Meanwhile, the first missile-cum ammunition barge launched by Rear Admiral
Sandeep Mehta from Naval Headquarters in Andhra Pradesh 2 days ago. According to the Indian Navy, 8 such barges are being constructed by private firm in Visakhapatnam. 4 people were injured in a clash over land in Sirora village of the district. According to police officials, 2 groups in the village clashed and some shots were also fired in the air. The police, meanwhile, has arrested a man and his son for opening fire during the clashes. Meanwhile, a beautiful safari at Jaldapara National Park recently turned into a nightmare for 7 tourists after their vehicle was hit by 2 rhinoceros. The rhinoceros charged towards the safari jeep, while those on the vehicle had a narrow escape. कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके या थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूं कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा लिया। तो लेकिन अभी मैं हमारे धर्म के जो विद्वान हैं उनसे भी बेनती करता हूं, इस बात पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या अभी कल कोई ज़मीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा जी, तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जीने की शिक्षा उसमें दर्ज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा काम करो। लड़ाई है, निजी है, सरकारी है, कैसी भी है, आप बैठ के बात कर लीजिए, टेबल पे सब हो जाता है। तो ये जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी मंच जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। बहुत छोटा सा निमंत्रण दिया, आप इतनी भारी संख्या में आए। जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया, आज भावनगर में बहुत बड़ा एक सामाजिक आयोजन था। 201 लड़कियों की शादी थी, जो कि सोलंकी परिवार माननीय राजू सोलंकी जी उनकी अध्यक्षता में हर साल करते हैं। भरत जी वहाँ बैठे हैं और सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी आयोजन था, सभी लोग आए हुए थे। उसमें मैं शामिल होने के लिए आया। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं गुजरात के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पार्टी निकाली, जो पार्टी आज लोगों के दिलों में बसने लगी है। और उसके लिए गुजरात का सबसे बड़ा हाथ ये है कि आपने, गुजरात वालों ने हमें 13% के आसपास वोट दिए और हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन गई। तो जब भी कभी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा, तो ये गर्व से लिखा जाएगा कि नेशनल पार्टी गुजरात इलेक्शन के नतीजों के बाद बनी थी। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में खूब काम कर रही है। जो गारंटियां हमने दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव प्रचार में गारंटियां दी थी, वो गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली गारंटी हमने करप्शन फ्री पंजाब करने की दी थी, उस पर हम दिन रात लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पुरानी करप्शन, जिन्होंने पंजाब के टैक्स का पैसा खाया, उन पर केस हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता। और 75 साल में ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी सरकार ने अपने ही 1 साल के अंदर अंदर, साल अभी हुआ नहीं हमें, अपने ही 2 मंत्री और 1 MLA को भ्रष्टाचार के चलते उनको मुख्यमंत्री श्री
ભગવત માન સાહેબ 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે હતા. આજે તેઓ ભાવનગરમાં સામાજિક આગેવાન અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા એવા રાજુભાઈ સોલંકીએ જે આયોજન કર્યું હતું 201 સર્વજ્ઞાતીય સમૂહ લગ્નનું, એમાં એમણે હાજરી આપી છે. સાથે સાથે ગુજરાતની જનતાનો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને માનનીય ભગવત માનજીએ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતની જનતાએ જે 2022ની ચૂંટણીમાં ખૂબ મોટું આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કરી અને નેશનલ પાર્ટી બનાવી છે. હું માન સાહેબને જ કહીશ કે પત્રકાર બંધુઓને ये ख्याली पुलाव हैं. पंजाब जो है वो पहले 10 साल बहुत काले दिन देख चुका है. तो पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाज़त नहीं देंगे. और पंजाब की सरकार आम आदमियों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जो रोज़गार चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहते हैं, अपना इलाज वर्ल्ड क्लास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं. हमारे यहाँ ऐसा कोई आके बोल दे कि मैं पता नहीं ये करूँ कानून से बड़ा कोई नहीं है. तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये एक वो आपके सेगमेंट नहीं चलते 5 मिनट में 200 खबरें, ये उसकी एक छोटी सी होती है. तरीके से खालिस्तान पंजाब के अंदर जिस तरीके से खालिस्तानी नारे लगे और जिस तरीके से आप आके देखिए, खुद आके देखिए कौन कौन वहाँ पे नारे लगा रहा है. ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है. तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है. वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए. पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा. पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है. अमन शांति कायम रखने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध भी है. और लोगों के लिए मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों को ये आश्वासन भी देता हूँ कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चिंता पंजाबियों के मन में नहीं है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगी. वो पंजाब आने वाले 6 महीने में 7 महीने में पंजाब का जो पंजाब है वो उसकी चमक जो है वो आपको देश भर में दिखेगी, तरक्की की और किसी बात की. मैंने आपको कहा है पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, हर बीज उग जाता है, नफरत का बीज वहाँ नहीं होता. आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक और सामने बात आ रही है खालिस्तान की. कुछ लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं. उसको लेकर पंजाब सरकार जिस तरीके से, क्योंकि उस दिन मैडम अगर अमन कानून की स्थिति खराब होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने नहीं. हिंसा नहीं थी, असली हिंसा तो अभी बाकी है. ये ख्याली पुलाव हैं. पंजाब जो है वो पहले 10 साल बहुत काले दिन देख चुका है. तो पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाज़त नहीं देंगे. और पंजाब की सरकार आम आदमियों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जो रोज़गार चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहते हैं, अपना इलाज वर्ल्ड क्लास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं. हमारे यहाँ ऐसा कोई आके बोल दे कि मैं पता नहीं ये करूँ कानून से बड़ा कोई नहीं है. इसलिए ये जो बातें हैं, ये एक वो आपके सेगमेंट नहीं चलते 5 मिनट में 200 खबरें, ये उसकी एक छोटी सी होती है. खालिस्तान पंजाब के अंदर जिस तरीके से खालिस्तानी नारे लगे और जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में लोग सामने आए, लगता है कि आप 1000 लोगों को क्या पंजाब मानती हैं? आप आके देखिए, खुद आके देखिए कौन वहाँ पे नारे लगा रहा है. ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं,
विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा, पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। अमन शांति कायम रखने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध भी है और लोगों के लिए मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों को ये आश्वासन भी देता हूँ कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चिंता पंजाबियों के मन में नहीं है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगी। वो पंजाब आने वाले 6 महीने में 7 महीने में पंजाब का जो पंजाब है वो उसकी चमक जो है वो आपको देश भर में दिखेगी, तरक्की की और किसी बात की। मैंने आपको कहा है पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, हर बीज उग जाता है, नफरत का बीज वहाँ नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक और सामने बात आ रही है खालिस्तान की। कुछ लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर पंजाब सरकार जिस तरीके से, क्योंकि उस दिन मैडम अगर अमन कानून की स्थिति खराब होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने नहीं। और उसके बाद हमने OPS ओल्ड पेंशन स्कीम हमने कैबिनेट में लेके उसको प्रवानगी दे दी। अभी केंद्र से बात कर रहे हैं। वैसे तो केंद्र को कर देना चाहिए था ये पूरे देश के लिए कि जो सरकारी कर्मचारियों के पैसे कटते हैं GPF EPF में, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के रूप में वापस मिलने चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, उनके पैसे अभी भी पैसे उनके काटते हैं, वो पैसे रखते हैं लेकिन किसी भी शेयर मार्केट में कहीं भी लगा देते हैं। और शेयर मार्केट जब गिरती है उसमें अमीर नहीं गिरता, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट गिरने का मतलब एक सरकारी परिवार, सरकारी मुलाजिम का परिवार गिरना, गरीब गिरता है। अभी LIC पर तलवार लटक रही है, उसमें कौन सा पैसा किसका पैसा लगा? देश के गरीबों का। तो गरीबों से पैसा लेके और बड़े बड़े लोगों को बचाना, ये तो हमारे देश की कभी भी संस्कृति रही नहीं थी। तो पंजाब में हमने अब तक 28,000 के आसपास कच्चे मुलाजमों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे उनको पक्के कर दिया, रेगुलर कर दिया। कुछ हाई कोर्ट मानयोग, हाई कोर्ट की मानयोग, सेशन कोर्ट्स की कुछ बाधाएं थी, वो दूर करके फिर उसके बाद हम उनको कैबिनेट में ले आकर उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और 27,000 के आसपास हमने सरकारी नई नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र देके वो काम कर रहे हैं। 1 साल अभी हुआ। All right, we slip into a very short break for now, but top stories and news breaks to continue on the other side. CBI heat on Sisodia intensifies, grilling on for more than 3 hours today. Mufti at it again, blames government or not terrorists for the brutal killing. खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट, यू कैन डिक्टेट गवर्नर। So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही
भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody, army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा, अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। क्या खालिस्तानी सरकार है पंजाब में? क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान मिस्टर वन विलियम से द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। So we are now getting the live pictures of Manish Sisodia, who is now reached here. Manish Sisodia is now reached here. We are getting the live pictures of Manish Sisodia. Sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर आप? CBI heat on Sisodia intensifies. Grilling underway as Showdown continues in the national capital.
मैं केंद्र सरकार की सारी एजेंसी से ये पूछना चाहती हूं, कहां गए ये 10,000 करोड़ रुपए अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है? Kejriwal's deputy Sisodia's grilling underway, but Aam Aadmi Party continues to cry vendetta. Manish Sisodia! Zindabad! 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 Manish Sisodia! Modi mar gaya! Modi mar gaya! Modi mar gaya! After Vadra Congress, now Aam Aadmi Party targets and abuses Prime Minister. Raise Modi Mar Gaya slogans. Another targeted killing in Jammu and Kashmir. Kashmiri Pandit shot dead in Pulwama. हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग के बचे हुए हैं, इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। Mehbooba Mufti is at it again, blames government, not terrorists, for the brutal killing. On the second day of his first visit to India, German councillor in Bengaluru today. Good afternoon and thank you for staying with Republic. This is live and breaking at 3:30. I'm Sukesh Samant and our top focus this afternoon. After the Vadra Congress, it is now the Aam Aadmi Party that has targeted and abused the Prime Minister. Manish Sisodia's grilling is underway and Aam Aadmi Party leaders raised Modi Mar Gaya slogans when they were being detained. BJP has hit out at the Aam Aadmi Party for this lowest level of politics that is now being played out. Remember, the Aam Aadmi Party has been blaming the BJP for political vendetta, as Manish Sisodia has said that all the allegations made against him in the Liquorgate scam are false. As we talk, questioning is underway. Meanwhile, let's take a look at that sequence where Aam Aadmi Party workers raised murderous slogans against Prime Minister Modi. Manish Sisodia! Zindabad! 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 Manish Sisodia! Modi mar gaya! Modi mar gaya! Modi mar gaya! Manish Sisodia! Zindabad! Aam Aadmi Party! Aam Aadmi Party! Aam Aadmi Party! नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चले भाई, थोड़ी सीधी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मत जाना मैडम, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CBI के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CBI के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CBI के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। मैडम क्या कहेंगी, आप लोगों की गिरफ्तारी हो रही है? हमारी गिरफ्तारी हो रही है कि हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को इन लोगों ने जबरदस्ती
और आज मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही घृणक है, बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरा कब्र खुदेगा, अभी मैं टीवी पे देख के आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले नारे दे रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये किस प्रकार का भाषा है? अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग करने से सच्चाई छुप जाएगी? आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मर जा मोदी। ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये भाषा उचित नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय। अडानी के नौकर मोदी है, अडानी के नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। अडानी का नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है, मोदी है। अडानी के नौकर कौन है? मोदी है। मोदी दरवाजा नहीं आता है, मोदी मेरे कमर उधरगी, मोदी मेरे कमर दरवाजा नहीं आता है, मोदी मेरे कमर उधरगी। सिसोदिया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय। अडानी के नौकर मोदी है, अडानी के नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। अडानी का नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है, मोदी है। अडानी के नौकर कौन है? मोदी मेरे कमर दरवाजा नहीं आता है, मोदी मेरे कमर उधरगी, मोदी मेरे कमर दरवाजा नहीं आता है, मोदी मेरे कमर उधरगी। सिसोदिया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय। अडानी के नौकर मोदी है, अडानी के नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। अडानी का नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है, मोदी है। अडानी के नौकर कौन है? मोदी है। Stepping into a short commercial break. On the other side, CBI heat on Sisodia intensifies. Grilling underway as showdown continues in the national capital. Another targeted killing in Jammu and Kashmir. Kashmiri Pandit shot down in Pulwama. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ। अरे एक्सीलेंट, और ज्यादा आना चाहता हूँ। क्या खालिस्तानी सरकार है? पंजाब में क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान लाल, Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना।
इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई? He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't governments and the state and everybody, army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything, and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a Another bid of Pakistani drug smugglers has been foiled by the BSF, and this time in Gurdaspur sector, a Pakistani drone has been shot down, and in fact later in the morning it has been recovered just because BSF troops have suspected a drone sortie in the midnight, and in fact they have opened 60 to 70 rounds, resulting a Pakistani drone has been shot down and dropped in the Indian territory. Later BSF has recovered the drone, and now the extensive search has been launched to verify that either this drone is carried with the weapon consignment or the drug consignment, and meanwhile they have also launched the investigation to verify the connections of the Pakistani drug smugglers at the Indian territory as well, just because this drone sortie is suspected every second day from the Pakistan in the Indian borders, in fact in Punjab, and even now Pakistani drone has been shot down by the BSF. Another bid of the Pakistan has been foiled by the BSF jawans. Time now for a short commercial break. On the other side, we get you details as on the second day of his first visit to India, German Chancellor is in Bengaluru today. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter?
जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसका मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान। मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा। We told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। I don't pay taxes to see these uncouth politicians send this image of Indian democracy. I don't pay taxes so they can have 45 non-stop minutes of a bloody battle. I don't pay taxes so they can kick, punch, attack, throw, and they can pin each other down and tear each other's hair. No, I don't pay taxes to hear them abuse and use the most ugly and dirty abuse at each other as they turn an elected house to a battle pitch. I don't pay taxes and you don't pay taxes so they can tear each other's clothes. I don't pay taxes to see this happen. If even tonight, after what I just showed you and what I am about to show you, if after tonight you remain quiet, then you and me and all of us will deserve this maniacal expression of democracy. We need to tell the Neta how disgusted we are and that in the name of no movement, no right or left wing so-called ideology can you justify this. Republic will only and only be on the side of the people and we will be against the Netas when that happens. So the Netas are on notice and the Netas have a choice. Sack, apologize or face the legitimate anger of the people of India. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem.
News coming in from Pakistan, where a bomb blast explosion was seen in the Balochistan region. According to reports, it has claimed 4 lives, including 2 police officers. At least 10 people have been injured. The local chief minister has strongly condemned the attack, alleging terrorists are responsible for the incident. Although no particular group has claimed responsibility for the attack in Barkhan, which is about 500 kilometers east of the provincial capital of Quetta, the blast has killed 4 at a crowded market in Pakistan's Balochistan. On that note, we step into a short commercial break. We'll be back on the other side. We'll get you details on CBI heat on Sisodia that intensifies. Grilling is underway as showdown continues in the national capital. Kejriwal's deputy Sisodia's grilling is underway, but Aam Aadmi Party continues to cry vendetta. खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army? They just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything, and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। क्या खालिस्तानी सरकार है पंजाब में? क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान मिस्टर वन, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। So we are now getting the live picture
pictures of Manish Sisodia who's now reached here. Manish Sisodia is now reached here. We are getting the live pictures of Manish Sisodia. Sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर आप? CBI heat on Sisodia intensifies. Grilling underway as showdown continues in the national capital. मैं केंद्र सरकार की सारी एजेंसी से ये पूछना चाहती हूँ, कहां गए ये 10,000 करोड़ रुपए अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है? Kejriwal's deputy Sisodia's grilling underway, but Aam Aadmi Party continues to cry vendetta. After Vadra Congress, now AAP supporters target and abuse Prime Minister, raise Modi Mar Gaya slogans. Another targeted killing in Jammu and Kashmir. Kashmiri Pandit shot dead in Pulwama. फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है. Mehbooba Mufti is at it again, blames government not terrorists for the brutal killing. And on the second day of his first visit to India, German Chancellor is in Bengaluru today. Good afternoon, this is Live and Breaking at 4 p.m. I'm Sukesh Sawant, and well, it is a major showdown in the national capital that has been on since this morning as CBI is questioning Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. The grilling is underway. Aam Aadmi Party, meanwhile, has been holding sporadic protests and back-to-back news conferences claiming political vendetta. Let's give you a sense of how Aam Aadmi Party has been building up this spectacle this Sunday. पहले करेंगे शराब में भ्रष्टाचार, फिर जांच होने पर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार. ये बन चुका है आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार. ये कट्टर करप्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचार करती है और सवालों का जवाब देने के बदले कभी भटकाने का काम, कभी कवर अप करने का काम, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलने का काम और कभी डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है. कहां गए ये 10,000 करोड़ रुपए अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है? आपने उनके घर पर रेड कर ली, आपने उनके ऑफिस पर रेड कर ली, आपने उनके लॉकर पर रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव पर रेड कर ली. एक पैसा आपको नहीं मिला, चाहे उनके घर में, चाहे उनके ऑफिस में, चाहे उनके लॉकर में, चाहे उनके पैतृक गांव में. Piyush and Anuj now joining us live on the broadcast. Piyush is at the CBI headquarters as questioning is underway for Manish Sisodia. Piyush, any details of how long it will continue, the line of questioning that is underway, and when is Manish Sisodia expected to come out? Well, the questioning is still going on. It's been 5 hours that Manish Sisodia is facing the questions from the officers of the Central Bureau of Investigation. Let me try to show you pictures from the place from where right now I'm reporting. You can see as to how there are multiple areas of barricading. Those who are there in the morning, they are still in place. The security personnel, police officers, those who are deployed in large numbers, they are still in place. The buses, those who are called in, we can see even they are placed at the same location. So there are multiple layers of barricading. Those have already been put here by Delhi police officers, and that's the glass building which is there on your screens. That's the office of Central Bureau of Investigation where the grilling of Manish Sisodia is going on. Remember that last time on 17th of October when he was called in by the CBI for the questioning, he was questioned for around 9 hours, and today once again we can expect the questioning to go on. But Aam Aadmi Party is now claiming political vendetta. In fact, many leaders of Aam Aadmi Party have come out and said that today Manish Sisodia is going to be arrested, and before reaching here
to the CBI office. Manish Sisodia, who had first gone to Rajghat, claimed that he will be arrested, and if he goes behind the bars, then people of Delhi must not feel bad. In fact, the children, the kids, the students of Delhi who are studying in Delhi government school must continue with their studies, and there should be no protest taking place after his arrest. This is what he requested also to Aam Aadmi Party workers. But as Manish Sisodia was on his way to CBI headquarters, we saw as to how sporadic protests take place, not only at the CBI headquarters, also at the roads leading towards the CBI office. But the point here is that if this policy was too good, then why Delhi government was forced to take it back? When a recommendation was given by LG Vinay Saxena to do the CBI investigation into this very case, after a few months we saw as to how Delhi government decided to take back the liquor policy. We have seen as to how Manish Sisodia has been facing many allegations on the very day, first day when the CBI raids were conducted at his residence. The FIR was filed. He was made as the prime accused in that particular case. 15 more people were named in that FIR. The allegations were that the Delhi government, which formed the policy, somewhere benefited the liquor dealers because the way the licenses were granted to liquor traders had given a lot of benefits to these dealers, and in lieu of that they had paid a lot of money as kickbacks to many Aam Aadmi Party leaders. So these are the allegations which Arvind Kejriwal's government, Manish Sisodia as the minister, has been facing. On the other side, Aam Aadmi Party and other leaders of Aam Aadmi Party have been saying that there is no such scam took place in liquor policy. You stay on with us. Also, let's bring in Shavan. Shavan, what are you picking up from your sources in the CBI, and how long is the questioning to continue? Because on the outside, politics of the lowest discourse that is being witnessed, and even in the protest that the Aam Aadmi Party is staging, murderous slogans against the Prime Minister, abuses of the lowest level that are being hurled at him by the Aam Aadmi Party. Well, in fact, the Central Bureau of Investigation is completely tight-lipped about what's exactly happening at this point in time. The questioning started a little after 11 o'clock. In fact, generally what we have seen is that in cases like this, there is a break that is taken. The person is given a break for at least lunch. They're allowed to step outside. But as far as Manish Sisodia is concerned, that did not happen. He hasn't been given any break. Whether at all the lunch was provided inside, that's not clear at this point in time. There's no word really coming in from the CBI at this stage. In all likelihood, more clarity would only come in perhaps a little later in the evening as to what sort of action are they planning to take. Now, whether at all there is going to be any sort of punitive action in the form of an arrest, that's not known. But having said that, that's a call that the investigating officer would only take at a later stage, depending on multiple issues. One, whether at all Manish Sisodia has been cooperating with the agency. That's one of the base grounds that for any punitive action. Second, would be with regards to the evidence that has been shown to him, that they've gathered over the last couple of months during the investigation, in which they essentially suspect that Manish Sisodia was well aware of the fact that this particular policy was being drafted in a manner which was only going to benefit a few, and those few happen to be alleged close associates of the Deputy Chief Minister itself. So that's something that they are looking at this point in time. Apart from that, remember the grave allegation that has been levelled against the Deputy Chief Minister Manish Sisodia is with regards to an alleged meeting that took place inside the Chief Minister's residence, where a top bureaucrat from the Delhi government was actually called in. He was handed over a document and he was essentially told to basically draft the excise policy as per what is written in that particular document, and later on that was provided to the group of ministers, which essentially indicated that this was already pre-decided as to what the excise policy is going to look like. It also turns out during the investigation that the draft excise policy was chalked out after consulting
those who benefited from the policy, or those who are about to benefit from the policy, the ones who are holding the licenses. It is they who are aware of it. So it does appear that this was basically done in connivance with the liquor traders, the liquor licensees at a later stage. And the fact of the matter is that Manish Sisodia was essentially benefiting from it. Along with him was, of course, the Aam Aadmi Party, where they say that the proceeds of crime was being basically diverted through multiple companies, finally enabling the Aam Aadmi Party to use it for their own political campaigns. In fact, they have put out details with regards to how much money was actually raised. They say that this was in the form of kickback that was diverted and used during the Goa elections. Roughly about 70 lakh rupees is what the enforcement directorate says. But as far as the Central Bureau of Investigation is concerned, they are essentially looking at the pecuniary advantages that were meted out, and more importantly, whether at all those who are being accused in this particular case, whether they have been in touch with the Deputy Chief Minister even before the excise policy was actually drafted. So they are essentially focusing right now with regards to the evidence that has been gathered over the last couple of months when the investigation was carried out. Right. Shravan, Anuj is also with us, and we'll go back to him in just a short while from now, Anuj, as we play out some responses we are getting from Aam Aadmi Party leaders. एक सरकार अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, आज उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है। और पिछले दिनों जो लाखों करोड़ का घोटाला इस देश के सामने आया, मोदी और अडानी का घोटाला, अडानी को ही कोयला दे दिया, अडानी को ही गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है। जिन करोड़ों लोगों का पैसा LIC और SBI में लगा है वो डूब रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी अडानी का नाम नहीं लेते। अडानी के खिलाफ CBI नहीं होती, ED नहीं होती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होती, सेबी की जांच नहीं होती। हजारों करोड़ का काला धन मॉरिशस और कैरेबियाई देशों से अडानी की कंपनी में लगा, उस पर कोई जांच नहीं होती। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं दिन रात। इतना क्यों डर लगता है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से? क्यों इतने आप भयभीत हैं आम आदमी पार्टी से? जितनी भी कायरतापूर्ण कार्रवाई होगी उतनी ही आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। इसलिए इनको जो भी कार्रवाई करना है करें, और हम लोग डटे हुए हैं, अपने मुद्दों को लेकर काम करें। Anuj, while Manish Sisodia is being questioned, the Aam Aadmi Party on the outside is leaving no stone unturned to keep that narrative going, where they say it is vendetta politics, while Sisodia has claimed that these allegations are false. What has really been happening since this morning is a sort of a spectacle, from invoking Bapu to Bhagat Singh to holding back-to-back news conferences. What's the plan of the Aam Aadmi Party, as we understand that Sisodia is still not out? Protests that were staged, Aam Aadmi Party leaders who were detained, and they're keeping this rage going. Well, exactly, as you pointed it out very rightly, that since from the morning we are seeing this kind of reaction. The line taken by Aam Aadmi Party remains the same, and they are calling it a political vendetta. As you mentioned it, yes, we have seen several press conferences after press conferences that has been done by the Aam Aadmi Party. There's 6 press conferences has been already done by Aam Aadmi Party, and the line taken is one, that this is all political vendetta, whereas they are also saying, as Aam Aadmi Party is growing and is a national party now, so the Prime Minister, taking the name of the Prime Minister and taking the name of BJP, Aam Aadmi Party is saying, is afraid of Aam Aadmi Party, is afraid of Arvind Kejriwal, and that is why they are using the agencies to nab our people. That's something, the line which has been taken by. आपका डर सता रहा है,
क्या ऐसा किया है क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? अगर किया है तो फिर आप सबको कहने से भी कुछ नहीं होगा। हमारे पास कविता जी ने कल एक आरोप लगाया है कि अडानी मुद्दे पर क्यों आप लोग मौन है, मोदी जी क्यों मौन? सारी संस्थाओं ने सब कुछ अपनी तरफ से कह दिया, वित्त मंत्री ने कह दिया, डिमांड है, सब कुछ कह दिया साहब। उस पे हमें उस पे सब कुछ कह चुके हैं। डर है जेपीसी डालने के लिए? मैंने कहा उस पे सारे बयान, सारी एजेंसीज के, सारे रेगुलेटर्स के, सबके आ चुके हैं। हमारी रेगुलेटर व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो उसमें सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। बार बार राहुल जी ने अग्निवीर के बारे में उंगली उठाए, आपका देश के युवा के बारे में आपका क्या समझ है? सॉरी, अग्निवीर के बारे में राहुल जी ने बार बार उंगली उठा रहे 4 साल के बाद युवा के। एक आंकड़ा 54 लाख 54 लाख युवक युवतियों ने अग्निवीर में भर्ती होने के लिए आवेदन दिए। Shravan, I want to come back to you because it has been a Sunday of massive political face-off between the BJP and the Aam Aadmi Party, which in all sincerity has been quite the case for the past many days after the mayoral polls and the very intense battle that we've seen on both sides. And this is exactly the point that the Aam Aadmi Party is once again trying to push, saying that the BJP is really settling political scores and there is nothing to the allegations that are levelled against them in the Liquorgate scandal, but it is really for the agency to investigate into every detail and only in due time when they can put out what is the conclusion that is finally drawn is when we'll know who stands where. Well, in fact, there are two sides to this entire argument. One, if you see it from the Aam Aadmi Party's perspective, then they are essentially trying to link almost the entire investigation to some sort of a political stunt that has been carried out by the Bharatiya Janata Party. If you remember, when this FIR was basically registered, they trained their guns at the Lieutenant Governor, indicating that it is the LG who was basically doing this to try to disrupt the work that was being done by the Aam Aadmi Party. Then when he was called in for questioning, this was during the Gujarat elections. It was just about days before Manish Sisodia was essentially supposed to head towards Gujarat for campaigning. At that point in time, the argument that was put forth by the Aam Aadmi Party was that this was an attempt to curb the rise of the Aam Aadmi Party in the state of Gujarat. Thereafter, remember, there have been no summons that were actually sent out till about last week when the summon was sent to Manish Sisodia. He had sought for more time and it was mayoral elections were supposed to take place and they were waiting for that to happen, and only after that he would have responded to it. All this while, what has happened from the, if you see it from the perspective of the investigative agencies, right from the day one of the investigation, they've been maintaining that there is a process that the investigation basically follows, which essentially entails, one, examining those who have been named as an accused in this particular FIR that has been registered, in which the Deputy Chief Minister, Manish Sisodia, is accused number one. Apart from him, there are 14 others who have also been named, which includes certain companies, which includes some of them who have already been arrested, for instance, communication strategist of Aam Aadmi Party, Vijay Nair. Apart from that, Samir Mahendru, Abhishek Boinpalli and several others who are basically over a course of time that they were basically called in for questioning. Some have also been placed under arrest. Now, the investigative agency has been saying that they need to basically establish whether at all there is some sort of a criminal conspiracy in this particular case. That is, how exactly is the Deputy Chief Minister involved in his alleged involvement in this entire matter. Now, after several months of investigation, they've basically come across several digital evidence pertaining to how the excise policy was drafted, who are the people who are aware of the excise policy, whether at all there was any leakage. It turns out that yes, there was a leakage. It also turns out that there was an exchange of money. In terms of the movement of money, of course, they're basically looking at the monies that have basically gone into the hands of a few political leaders. In fact, they say that it is Vijay Nair
who acted as the intermediary. Now that's the allegation that the Enforcement Directorate as well as the Central Bureau of Investigation has levied on Vijay Nair, saying that it is he who was actually dealing with the liquor traders and, for that matter, even the bureaucrats, and it is he who was giving the instructions on behalf of the Aam Aadmi Party. And later on, when the money was being diverted, it was through Vijay Nair that the money was also being diverted, which was essentially what both the agencies feel was the kickback that was being diverted. Absolutely, Shravan, and we are keeping a very close eye on every development that emerges as we are tracking the story into every detail and what eventually happens. For the moment, thank you, Shravan. We slip into a short commercial break and a quick check of the other big stories we are tracking. Yes, another targeted killing of a Kashmiri Pandit in the valley. He was shot dead in Pulwama when he was going to the market. And it is the second day of his first visit in India. German Chancellor is in Bengaluru today. Originally, you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada, and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ। अरे एक्सीलेंट। और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान? मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीछे जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई? We told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states.
So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 डेज। और And those are the pictures coming in from Jammu, where anger is mounting against the killing of a Kashmiri Pandit in Pulwama, where the biggest concern now about the safety of Kashmiri Pandits in the valley. And you see how effigies are being burned. Gursimran, my colleague, is also standing by at the very spot. Over to you, Gursimran. Terror groups, and today he was killed by the terrorists in Pulwama district. Now the flag of Pakistan as well as the effigy of the Pakistan is being burned here. Yes. Okay. And on that note, we are stepping into a very short commercial break. On the other side, we continue to get you these pictures as we see protests underway over the killing of a Kashmiri Pandit. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 डेज और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty
Do you think that I should have accepted that later? जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना, इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। Thanks for staying tuned to Republic to this edition of Live and Breaking. I'm Samiksha Srivastava. There is massive anger in JNK over the targeted killing which has happened of Kashmiri Hindus. Once again, Sanjay Sharma, who was shot dead in broad daylight. We'll go across to Gursimran as well, where massive protests are taking place in Jammu as we speak. Gursimran, if you can once again take us through what we know, at what time was this targeting killing reported, and of course, the demands they are being made by the Kashmiri Hindus at this point. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के अंदर वहां पर आतंकवादियों को ढूंढ करके खात्मा करने का काम और हमारे जांबाज सैनिक जो आतंकवाद को खत्म करने का काम जो कर रहे हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो टारगेटेड किलिंग करके अगर ये सोचेंगे कि हम यहां के देशभक्त समाज को डरा देंगे, तो मैं उनको कड़ी चुनौती देता हूं कि यहां का समाज ना डरेगा ना डिगेगा और तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक एक एक आतंकवादी समाप्त नहीं हो जाता, मानवता का एक एक दुश्मन खत्म नहीं हो जाता। So the BJP is staging a protest here in Jammu, wherein they are demanding that a strict action be taken against those who are involved in the terror acts in the Kashmir Valley, because there is an attempt being made to instill the fear among the locals, and that's why the BJP activists are staging protest against the Pakistan. They are saying that it is the Pakistan and the Pakistani proxies that are behind these targeted killings that are taking place in the Kashmir Valley, and there needs to an end to this, and this can only be achieved by wiping out terrorism from the Kashmir Valley. These civilians, they are anguished over what the Pakistan has been doing in the Kashmir Valley for long. Yes. All right, Gursimran there getting us all those scenes, massive outrage over the targeted killing which has happened. Zeenat is also joining us live. Zeenat, we understand that Lashkar offshoot has taken responsibility for this yet another targeted killing which has happened in Pulwama. Oh yes, Samiksha, the targeted killing that was reported from the Pulwama of South Kashmir, where a Kashmiri minority was targeted by the TRF, as they have claimed the responsibility. He has been identified as the Sanjay Kumar. And meanwhile, we are also seeing the political leaders coming up and targeting the government as far as the security scenario in the Jammu and Kashmir is concerned. We talk about Mehbooba Mufti. She had been quite vocal against the government, had been targeting the government for the security scenario in the Kashmir Valley. She's been saying that government has completely failed even after the abrogation of Article 370, when government had been claiming so much as far as the security situation improved in the Kashmir Valley. We are seeing the ADGP Kashmir saying that they are identifying the culprit and he will be either apprehended or neutralized soon. We have been seeing the CASO being launched in the Shopian, Anantnag, similarly in the Pulwama and the Avantipora, the adjoining district of Pulwama of South Kashmir, launched by the Jammu and Kashmir Police along with the Indian Army. The political leaders are training their guns, but at the same time,
talking from the BJP point of view, BJP again is saying that the Pakistan is responsible for such kind of killings because they don't want to see Kashmir turning normal. Jammu and Kashmir police trying their best to take the oxygen out from the terror outfits, because talking about the numbers of the neutralization of the terrorists for the last 2 years or so, more than 550 terrorists were neutralized, which is again a high, all-time high in the Kashmir Valley. And also we are seeing the recruitment levels coming down. But if we talk about the targets or the terror attacks in the South Kashmir for the last 3 days, this has been the second one. Earlier, one of the targeted attack was reported from the Hasanpura of Bijbihara, where a civilian whose father was serving in the J&K police, he was targeted, although his condition is stable. And now the Kashmiri Pandit who was on his way to the market, he was targeted by the terrorists. The TRF has claimed the responsibilities. He received multiple gunshots. He was evacuated to the hospital where the doctors declared him brought dead. Despite all this, what is happening in the Kashmir Valley, we are seeing that the killings or the targeting killings we talk about of the minorities in the Kashmir Valley, at ADGP Kashmir as well as the DGP Kashmir has made it quite ample times clear that they were able to avenge the deaths, and also those terrorists who were involved in the number of the killings, they have been neutralized in different type of anti-terror operations. Although TRF or that for that matter the Lashkar-e-Taiba, they are trying their best because the numbers of the cadre have really gone down. The way the J&K police and the army has carried the anti-terror operations, they have been neutralized in number of operations, and the police is still continuing to trace the terrorists who are involved in today's killing. Well, that's right. And Zeenat, what is absolutely terrible and unfortunate is, on one hand, we see those, very unfortunate visuals play out of the family mourning the death of the family member. But on the other hand, we see the likes of Mehbooba Mufti and Umar Abdullah, who continue to politicize this targeted killing which has happened. Let's listen into the reaction that's come in from Mehbooba Mufti, where instead of terrorists, she targeted the center over the targeted killings. ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है. हमारे पास अब बच्चे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं. इनको भी इस तरह रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं. बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है. All right, Zeena, they're reporting live from Srinagar, and Gursimran also joining us live from Jammu, where massive protests are taking place. A lot of anger palpable on the ground, Gursimran, as far as this targeted killing in Pulwama is concerned. Public Media Network. People from all walks of the society, they are holding protests, and what they are saying is that time and again when the normalcy begins to prevail in the Kashmir Valley, there are these kind of incidents that do take place on the directions of the Pakistan, on the directions of the Pakistani proxies, so as to destabilize peace. The Bharatiya Janata Yuva Morcha is also staging protest here in Jammu against the Pakistani atrocities on the Kashmiri Pandits, and what they are saying is that there should be action on those who were involved. महबूबा मुफ्ती कह रही है कि केंद्र सरकार जो है वो इसके लिए जिम्मेवार थी. ये किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान को, क्लीन चिट और केंद्र पर वार? महबूबा मुफ्ती का जो चरित्र है वो इसी तरीके से है. उन्होंने कभी हमेशा पाकिस्तान के सरबराही करने की, पाकिस्तान की हमेशा से दलीलें देने की काम किया है. ये जो पाकिस्तान आतंकवादी और उनके सरगना जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, इनको गिन करके खत्म करने का काम किया जाएगा, और देश के जांबाज सैनिक जो सुरक्षा बल है वो भी करने का काम कर रहे हैं, और देश की जो सशक्त सरकार है उसका दिशा निर्देश सीधा है कि आतंकवादी को छोड़ना नहीं है. ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों को ढूंढ करके खत्म करने का काम किया जाए. So every terrorist will be neutralized, and the BJYM activists are staging protests, Samiksha, here in Jammu against the Pakistan. They also burned the effigy and the flag of the Pakistan against the civilian killing that has taken place in Pulwama, Zachan. Yes, Samiksha. Well, that's right. Gursimran and Zeenat, requesting you both to stay with us. And as Gursimran is also getting us all those visuals of how there is massive anger against Pakistan, and particularly against Mehbooba Mufti as
as well, where she's failed to criticize Pakistan, whereas where she's trained guns at the center once again over the targeted killings which have been happening in J&K. Slipping into a very short break, but top stories and news breaks to continue on the other side. CBI heat on Sisodia intensifies, grilling underway for more than 4 hours now. Meanwhile, Kejriwal's deputy Sisodia's grilling underway, but Aam Aadmi Party continues to cry vendetta. खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army? They just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything, and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada, and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान? मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the
non-Soros media. Non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor. We have no money. The mainstream media has money. We are broke. Help us. Please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying. And news that is just coming in a major action that's been taken by the J&K administration to crack down on terror in the valley. We understand 3 employees have been sacked on charges of backing terrorism. A junior engineer, an employee in social welfare department, a teacher are among those 3 who have been sacked by the J&K administration. Zeenat getting us those details. Zeenat, what do we know about these 3 employees who've been sacked by the J&K administration on charges of backing terrorism and the suspected terror links? See, Samiksha, this is not the first time when the J&K government has terminated the service of those people who have been supporting the terrorism and have been also living there, earning their livelihood on government money. This time the employees from the Public Works Department, a teacher and an orderly, they have been terminated from the service. One has been identified as Manzoor Ahmed Ittu, who is a junior engineer and works with the Public Works Department. He has been terminated and as per the information that we are getting in, that he was supporting the terrorism and was recruiting people into the terror ranks. Simply, then we have a name of Said Salim Andrabi, who works as orderly in the social welfare department, and he was involved in the drug trafficking. And similarly, one Muhammad Arif Sheikh, who's a teacher in the government school of Riyasi, he has also के पीछे लगी है, जिसने भारत का नाम शिक्षा क्रांति में पूरे विश्व में आगे कर दिया। शिक्षा क्या होती है? सरकारी स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकती है? माइंडसेट करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, इस प्रकार से लाखों करोड़ों बच्चों की आशा के प्रतीक बन चुके एक शख्स मनीष सिसोदिया, उस पे ऐसे झूठे हास्यास्पद आरोप लगाती है जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाई 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो इसका ट्रेल कहां है? ये पैसा कहां से कहां गया? किस बैंक लॉकर में है? कहां छुपा हुआ है? ईडी, सीबीआई, आईटी सब लग गए। इन्होंने दीवारों को, घर के तकियों को, गद्दों को, सबको फाड़ डाला। एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर में चले गए
बैंक लॉकरों के अंदर इनको झुनझुना मिला, लेकिन फिर भी इनकी जो हाई कमांड से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को तो इन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। इनको खतरा सिर्फ एक ही इंसान से है, एक ही पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी से खतरा है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। ऐसा शख्स जो रोज सवेरे 6 बजे निकल जाए स्कूल देखने के लिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, जो बच्चों के बीच में मनीष चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसे शख्स के पीछे इस प्रकार से लगना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। अरविंद केजरीवाल देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यही कारण है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जो देश के भावी शिक्षा मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यही कारण है। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada, and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ। Excellent. और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा। जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई? We told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non
non-Soros media. Non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor. We have no money. The mainstream media has money. We are broke. Help us. Please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये स्टोरी क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे। And a quick look at news in brief. In yet another targeted killing in JNK, a Kashmiri Pandit was shot dead in Pulwama district. The deceased has been identified as a bank security guard named Sanjay Sharma. Medical Education Minister of Madhya Pradesh, Vishwas Kailash Saring's car met with an accident while he was returning from a development tour program in Bhopal, Madhya Pradesh. A short break coming up. On the other side, we'll get you the latest as the grilling of Manish Sisodia continues for over 4 hours now. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor.
So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that later? जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान। मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीछा। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, Center and State didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Good evening, you're watching Live and Breaking at 5 p.m. I'm Sukesh. We continue to get you updates from the national capital where, remember, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia is being questioned by the CBI, and on the outside, Aam Aadmi Party protesting against how they have concluded that Manish Sisodia may be arrested. But we are keeping our focus on all that is emerging. We'll get you all the details. First, a quick check of the headlines. Now getting the live pictures of Manish Sisodia who is now reached here. Manish Sisodia is now reached here. We are getting the live pictures of Manish Sisodia. Sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर आप? CBI heat on Sisodia intensifies. Grilling is underway as showdown continues in the national capital. मुझे लगता है कुछ लोगों ने जांच में सहयोग करने की बजाय मीडिया में हल्ला ज्यादा करते हैं। किस बात का डर सता रहा है? BJP sets the record straight, tells Aam Aadmi Party to face the law instead of crying foul. After Vadra Congress, now Aam Aadmi Party supporters target and abuse Prime Minister, raise Modi Mar Gaya slogans. Shot dead in Pulwama. बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। Mehbooba Mufti is at it again, blames government not terrorists for the brutal killing. On the second day of his first visit to India, German Chancellor in Bengaluru today.
And well, it's a major showdown in the national capital as CBI is questioning Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. As the grilling is underway, it's been more than 5 hours. Aam Aadmi Party has been holding protests and back-to-back news conferences where they say that it is nothing but political vendetta. Sisodia says that all the allegations leveled against him are false. Listen in to both sides. पहले करेंगे शराब में भ्रष्टाचार, फिर जांच होने पर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। ये बन चुका है आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार। ये कट्टर करप्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचार करती है और सवालों का जवाब देने के बदले कभी भटकाने का काम, कभी कवर अप करने का काम, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलने का काम और कभी डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। कहां गए ये 10,000 करोड़ रुपए अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है? आपने उनके घर पर रेड कर ली, आपने उनके ऑफिस पर रेड कर ली, आपने उनके लॉकर पर रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव पर रेड कर ली। एक पैसा आपको नहीं मिला, चाहे उनके घर में, चाहे उनके ऑफिस में, चाहे उनके लॉकर में, चाहे उनके पैतृक गांव में। And my colleagues continue to track all the developments on the ground. This, remember, as we see sporadic protests where several Aam Aadmi Party leaders were also detained by the police. They have been crying vendetta, saying that it is the ruling party that is targeting the Aam Aadmi Party, and that show of strength as Manish Sisodia also held a road show before he actually entered into the CBI office. Now remember, at one hand, Sisodia has been saying that he will cooperate with the investigation. But on the other hand, we saw the Aam Aadmi Party already jump to the conclusion that Sisodia will be arrested, and which is why such a spectacle where they also invoked Bapu and Bhagat Singh, saying that they are being targeted. Piyush is joining us from outside the CBI office. Piyush, more than 4 hours that Sisodia is being questioned, and we don't know how long this will continue. In the meanwhile, Aam Aadmi Party leaving no stone unturned, keeping the temperatures high and pushing that narrative of political vendetta against them, saying they are being targeted. Well, absolutely, and that is why today in the morning we saw as to how Manish Sisodia along with other Aam Aadmi Party leaders had marched from Sisodia's residence till Rajghat, and then from there Rajghat till CBI headquarters. We saw as to how they tried to create a political spectacle out of this entire questioning of Manish Sisodia. This is not the first time when this is happening. For the very first time Manish Sisodia was summoned here at CBI headquarters, on the same day also we had seen how the similar sort of approach was adopted by Aam Aadmi Party leaders. It is also important to highlight that the Aam Aadmi Party has been giving clean chit to Manish Sisodia. In fact, Arvind Kejriwal has been saying that there is no such scam which has taken place, and because of this policy only their government in Punjab has been able to get the revenue of more than 40% in the state. So at one side CBI has called Manish Sisodia for questioning, on the other side Aam Aadmi Party giving Manish Sisodia clean chit. In fact, we have also seen as to how a hero has been made out of Manish Sisodia by Aam Aadmi Party leaders. Let me try to give you a sense of the place from where I am reporting. It is the CBI's headquarters, where section 144 is still in place. Barricades have been put at either sides of this very road which connects to CBI headquarters. You can see as to how buses, those who are called today in the morning, apprehending that there could be a sporadic protest at the part of Aam Aadmi Party workers. These buses are still there at its place. The multiple layers of barricading, those are put, they are still in place. We are reporting from the second layer of barricading, and on that on my front is the CBI headquarters, which Mahendra is focusing on. So there at this office, Manish Sisodia is facing serious questions. He is facing grilling at the hands of CBI officials. Remember that for the third time, in fact, he is being questioned. First time when the recommendations were given by VK Saxena, Delhi's LG, CBI had filed a case and had gone to his house. In fact, his house was raided by CBI officers. A few details and few important evidences were also collected from
from his house, following which he was called in here at CBI headquarters on 17th of October, and then we saw as to how on 19th of February again he was called in, but he did not appear, citing that he has to give final touches to Delhi's budget, and today he is here to face the questions of CBI. Now we'll have to wait and watch for how long he is going to be grilled here at CBI headquarters, but the Aam Aadmi Party leaders believe that he has not done anything. In fact, the same policy in Punjab has been able to generate a revenue of more than 40%. Yes, in fact, on this point, I'd also like to bring in Shravan, because Shravan, it is very important to draw the timeline for our viewers who are just tuning in. It was in August 2022 when the CBI had first registered a case, after which they started conducting searches. Now, the Aam Aadmi Party is claiming that the CBI has not found anything concrete until now, whereas we also understand that today when Manish Sisodia is being questioned, certain evidences that the CBI is going to corroborate while he is being questioned. So really to understand where this is headed and what's expected. Well, in fact, the Aam Aadmi Party may continue projecting that there is absolutely no evidence that any of the agencies have. But it is for the court to decide whether at all the agencies do have any evidence to basically prosecute anyone. Even for that matter, there have been several others who have been arrested. But the basic question that perhaps Manish Sisodia will have to answer while he is inside the Central Bureau of Investigation is, one, whether at all there was a meeting between him and a gentleman who goes by the name of C. Arvind, who happens to be a bureaucrat in the Delhi government, whether at all Arvind was actually called in by Manish Sisodia to the residence of the Chief Minister Arvind Kejriwal, and a document was handed, and this document essentially had what should be in the excise policy, and the CBI basically suspects that this document that was prepared by Manish Sisodia was in consultation with those who are about to be given the licenses. So those who are supposed to be given the licenses, they already knew what the policy is going to look like even before it was made public, even before the consultations took place within the GOM. And in fact, it turns out that there is digital evidence to prove the fact that there was leakage of this particular policy even before it was made public. So these are few questions that Manish Sisodia will have to answer, given the fact that he was heading the excise department. Secondly, with regards to the fact that Vijay Nair had directly asked for money from the liquor traders, and they in fact had also accepted it. The kickbacks that were received were finally being funneled for political activities. These are few questions that perhaps Manish Sisodia will still have to answer. Now, whether at all he's placed under arrest or not, that depends on multiple factors. One essentially being whether at all he's cooperating with the agency at this point in time. Secondly, what are the kind of responses that he's giving to the evidence that has been put on table at this stage. All that is going to be evaluated, and only then perhaps the investigating officer will take the final call of placing Manish Sisodia under arrest. Before that, no decision can perhaps be taken, or it doesn't essentially happen that it is pre-decided that they are going to go ahead with the arrest. That there is a due procedure that has to be followed, and let me just make this abundantly clear that there are multiple stages to it, and there are multiple heads who basically take this decision of whether at all they need to place anyone under arrest. Because remember, the Central Bureau of Investigation is also answerable to the court. When, if at all they place anyone under arrest, they will have to now go to the court saying that these are the following evidences that they have, and these are the kind of responses that have come in, and they may not be satisfied with that kind of response. But fact is, Shravan, that somewhere the Aam Aadmi Party already jumped to the conclusion like Sisodia was being arrested, and which is why we saw the kind of spectacle that it was. But over the political face-off that we witnessed in the national capital today, it is political discourse of lowest order as Aam Aadmi Party supporters targeted and abused the Prime Minister. We've seen how the Congress has always been at it. But today, Aam Aadmi Party supporters who raised Modi Mar Gaya slogans when they were being detained, and later Aam Aadmi Party leaders also raised Adani Ka Naukar Modi slogans. BJP has hit out at the Aam Aadmi Party, saying they will not tolerate this insult against the Prime Minister. Let's take a look at those sequences, after which I come back to you, Shravan and Piyush.
और आज मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही घृणक है, बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरा कब्र खुदेगा, अभी मैं टीवी पे देख के आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले नारे दे रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये किस प्रकार का भाषा है? अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग करने से सच्चाई छुप जाएगी? आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मर जा मोदी। ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये भाषा उचित नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। And we cut across to more breaking news coming in as film producer Kareem Morani is being questioned by the ED in the Sukesh Chandra case. You would remember how summons were sent to him in connection with this case. Several celebrities have their names involved in the money laundering case. Actors Jacqueline Fernandez, Nora Fatehi, who had received expensive gifts from Chandrasekhar amounting to crores of rupees, including luxurious cars and gifts that they had received. Also Kareem Morani, film producer, who is allegedly close to Sukesh Chandrasekhar. This is what reports suggest, that the film producer was very much in touch with Sukesh Chandrasekhar. On this note, I'd like to bring in Shravan. He's tracking all the details on the same. Shravan, Kareem Morani is being questioned. There are other cases also where his name is been dragged. But talking about the connection with Sukesh Chandrasekhar, what's being looked into specifically? Well, in fact, this is not the first time that Kareem Morani is now being examined by the Enforcement Directorate in the Sukesh Chandrasekhar case, in which the Enforcement Directorate has already filed a charge sheet. The allegation essentially being that he was, Sukesh Chandrasekhar was essentially close to two Bollywood actors, and for which he was trying to negotiate with Kareem Morani for a film, or for that matter, for a series for one of the Bollywood actors. And there is a link that is basically emerging in terms of certain linkages with regards to whether at all there have been any exchange of money. At this point in time, film producers only being examined. We are waiting for more details to emerge from our sources within the Enforcement Directorate, but all that we can confirm right now, as we speak, he's already being questioned by the Enforcement Directorate. All right, Shravan, many thanks for getting us those details. We'll keep coming back to you for more on this. And moving on, it is another conspiracy to send arms and heroin to Pakistan that has failed. Brave soldiers of 103 Battalion, 113 Battalion, who saw the movement of a drone in the wee hours of Saturday morning in that area, which comes under Gurdaspur sector, and foiled this attempt. Take a look at this report. Another bid of Pakistani drug smugglers has been foiled by the BSF, and this time in Gurdaspur sector, a Pakistani drone has been shot down, and in fact later in the morning it has been recovered, just because BSF troops have suspected a drone sortie in the midnight, and in fact they have opened 60 to 70 rounds, resulting a Pakistani drone has been shot down and dropped in the Indian territory. Later BSF has recovered the drone, and now the extensive search has been launched to verify that either this drone is
carried with the weapon consignment or the drug consignment, and meanwhile they have also launched the investigation to verify the connections of the Pakistani drug smugglers at the Indian territory as well, just because this drone sortie is suspected every second day from the Pakistan in the Indian borders, in fact in Punjab, and even now Pakistani drone has been shot down by the BSF. Another bid of the Pakistan has been foiled by the BSF jawans. We are getting the live picture. Sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर, आप you are facing serious allegations sir. Serious allegations आप रेज कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी. सर नीचे कर दो. कहना चाहेंगे सर आप. शीशा नीचे कर दो मनीष. See the picture of Manish who is now reaching here at CBI headquarters. Swinging to a short commercial break. On the other side, getting you details of that targeted killing in Jammu and Kashmir. A Kashmiri Pandit who was shot dead by terrorists in Pulwama. खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days और द अर्लिएस्ट। You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army? They just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything, and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना, इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। क्या खालिस्तानी सरकार है? पंजाब में क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान मिसमान मिलियन
answer the question of Republic TV. पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. Another targeted killing in the valley where a Kashmiri Pandit was shot dead by terrorists in Pulwama. The deceased has been identified as a bank security guard. His name was Sanjay Sharma. He was fired upon by terrorists when he was on his way to a local market. Medical Education Minister Vishwas Kailash Sarang's car met with an accident. He was returning from a development tour program in Bhopal in Madhya Pradesh. He was with his family when the car hit the divider. Massive fire broke out in a residential building in Sambar area of Ramban district of Jammu and Kashmir. Fire tenders rushed to the spot to douse the fire. This is the second such incident that has been reported in Ramban within the span of a month. Time now for a short break. On the other side, we get to that statement by Mehbooba Mufti. She's at it again. She's blaming the government and not terrorists for the brutal killing of a Kashmiri Pandit. Originally, you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada, and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi of Indian heritage, born in political Pakistan. जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा। जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसलिए तो उनको दे दिया ना। इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई।
He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't government send the state and everybody army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even Sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर, आप you are facing serious allegations. Serious allegations आप raise कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी. सर नीचे कर दो. कहना चाहेंगे सर आप. शीशा नीचे कर दो मनीष. See the picture of Manish is now reaching here at CBI headquarters. So we are now getting the live pictures of Manish Sisodia, who is now reached here. Manish Sisodia is now reached here. We are getting the live pictures of. Yes, sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर आप. CBI heat on Manish Sisodia intensifying, grilling underway as the showdown continues in the national capital. Arvind Kejriwal's deputy Sisodia's grilling is underway, but the Aam Aadmi Party continues to cry vendetta. मुझे लगता है कुछ लोगों ने जांच में सहयोग करने की बजाय मीडिया में हल्ला ज्यादा करते, इस बात का डर सता रहा है। The BJP is setting the record straight, telling the Aam Aadmi Party to face the law instead of crying foul. Another targeted killing reported in Jammu and Kashmir. A Kashmiri Pandit is shot dead in Pulwama. गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है. Mehbooba Mufti is at it again, blaming the government, not the terrorists, for the brutal killing. And this is the second day of the first visit to India, the German Chancellor in Bengaluru today. A very good evening. You're with us on Republic and I'm Deepthi Sachdeva. Let's put our focus on one more targeted killing that has been reported from Jammu and Kashmir. And you would recall over the last few months, you've seen a pattern to this. This time again, a Kashmiri Pandit has been identified, he's been targeted, and there is a good amount of politics already underway, with parties questioning right now the stance that has been taken by Mehbooba Mufti, who leave aside talking about Pakistan and the rogue state and the terror it foments every time in the valley. She instead is questioning the government of the day. Clearly, that's a stance that many say is against the country. A lot of anger over the targeted killing that has been reported on the right of your screens. You're looking at images of a little while earlier.
where the BJP has been out in the streets protesting. The deceased has been identified as Sanjay Sharma, who used to work as a security guard at a local bank. The terrorist opened fire on him while he was on his way to a local market. He was later rushed to a nearby hospital, but he succumbed to his bullet injuries. Let's quickly listen in to reactions that have come in. आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ, जहाँ पे कि टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। नॉर्मलसी जब जब आने लगती है तो मुझे लगता है कि एक प्रयास मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है और जानबूझ करके जो व्यक्ति वहाँ से 40 साल से ज़्यादा रह रहा था, संजय पंडिता, उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुरक्षा बलों ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने से चिंता एक बढ़ती है। पहले से ही कश्मीरी पंडित समाज इस पर रोष बार बार व्यक्त कर रहा है और जो लोग वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में वहाँ पर नौकरी कर रहे थे वो भी आज सड़कों पर हैं। तो मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लिया भी जाएगा और जल्द से इस पर एक्शन लिया जाएगा, उन लोगों को मार गिराया जाएगा। लेकिन दुखद घटना है, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। So you've heard from the top cop, you've also heard from Kavinder Gupta there of the BJP, both underscoring that the government of the day is doing enough. But they say that until and unless you have all political parties and everyone who gets together to speak in one language against Pakistan, this cannot be dealt with. So how has Mehbooba Mufti reacted? Like I just mentioned, she has spoken against the government, questioned the government, but not Pakistan even once. ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तान, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं। इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तान, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं। इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। So you've just heard from Mehbooba Mufti. Let's also get in our colleague Zeenat, who's tracking that story, and she joins us live right now. You know, Zeenat, what Mehbooba Mufti says is difficult to comprehend at multiple levels. You know, it's worrying, it's condemnable, because she not just says that, you know, the government of the day is to be blamed for whatever is happening right now in Jammu and Kashmir, but she also does say that these Kashmiri Pandits are used as pawns by the current government to try and give a semblance of normalcy in the valley. See, Dipti, this is not the first time when Mehbooba Mufti has made such statement or made statements against the government. She had been training the guns against the BJP government and also the LG administration here. She has been pointing out that whether it's the Kashmiri Pandits or the minorities, they are being used by the government as pawns, because the kind of killings that are taking place have not stopped despite the tall claims made by the government.
But simultaneously, if we see the situation and if we take the figures from the data, that what it tells you that more than 550 terrorists were neutralized, which is all-time high, and the recruitment levels have completely come down. There has not been any grenade incident or hit and run incident. But yes, we are seeing for the last 3 days that 2 incidents in the South Kashmir where terrorists tried to show their presence on ground. But whenever such killings happen, they are targeting only those people who are unarmed. When we talk about the anti-terror operations, we have seen the minimum or rather no collateral damage in this dispensation. Why Miss Mufti is not talking about that? Why don't she compare her tenure as the Chief Minister of Jammu and Kashmir with the present dispensation? When then the encounters used to take place, there used to be the collateral damage in the huge number, and the kind of recruitment levels used to be all-time high. What are the figures telling you now? That the recruitment level has come down, the anti-terror operations are taking place, and there is no collateral damage. If you take the data for the last 3 or 4 years, we see that there is no, almost zero collateral damage in most of the anti-terror operations. We are seeing that operations have been done in the most professional manner, and we are also seeing the crackdown coming from the government as far as those people, those civilians who under the garb of the government job, they are supporting the terrorists and the terror organizations, and how they are being terminated from the service. Even we talk about the today's action that has come from the J&K administration, that the 3 people working with the government sector from the, whether it is Public Works Division or in the Tehsil office or working with the Social Welfare Department or someone, a teacher, they all have been terminated because the police as well as the other agencies have found their role in planting their IEDs. They have been supporting the terrorism, and they have recruiting the people in the terror ranks. So the action is coming from the government because they are trying to take the oxygen out from the terror of it, and it's not that you take the magical wand in your hand, it will be done within a fraction of a second. That is not possible. But yes, compared to 2009, after the abrogation of 2019, yes, we have seen the situation improving on ground. Yes, Dipti. All right, obviously, but those figures do not suit a Mehbooba Mufti, the reason why she will definitely not speak about them, Zeenat. But I let you go, and thank you so much right now for getting us that live coverage. Earlier, also, Gursimran was at one of the protest sites where you've seen people really, really angry with that comment, and he sent us this ground report. Against Pakistan here in Jammu, against the targeted killings of the civilians that are taking place in Kashmir Valley, and the recent one in the Pulwama's Achan, where a Kashmiri Pandit was brutally killed by the terrorists. A local who never migrated out of the Kashmir Valley was on the target of the terror groups, and today he was killed by the terrorists in Pulwama district. Now the flag of Pakistan as well as the effigy the Pakistan is being burnt here. Yes. Are demanding that a strict action be taken against those who are involved in the terror acts in the Kashmir Valley, because there is an attempt being made to instill the fear among the locals, and that's why the BJP activists are staging protests against the Pakistan. They are saying that it is the Pakistan and the Pakistani proxies that are behind these targeted killings. Shift our focus now to this big breaking update coming in from the state of Punjab, where Ramandeep Tufan and Mohan Singh, 2 accused in the murder of Sidhu Moosewala, have died during a clash between the jail inmates. This happened in the central jail in Goindwal. Amandeep is also joining us live. He has more details on what happened. Amandeep, this again is a reflection of what's really going on in the state of Punjab. But having said that, what more do we know about what happened? Was this some kind of a gang war? How many people were involved? What has happened? Well, Deepti, what we are getting to know from inside Goindwal Sab Jail is that all the gangsters has a clash, and in fact they use sharp-edged weapons to attack each other, and resulting Manmohan Singh and Mandeep Singh, they both have been killed, and Keshav, another gangster, is seriously injured and he has been admitted to the hospital. And Deepti, they all basically belongs to Goldie Brad Lawrence Bishnoi gang, and they all are the accused of Sidhu Moosewala murder case.
और ये तीनों जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी थे एंड और जेल के मुताबिक इनका ब्लडी क्लैश हुआ। ये गैंग वॉर थी, आपस में ही झड़प थी। तेज़धार हथियार पता नहीं कैसे आए इनके पास गोविंदवाल साहब जेल के अंदर, जहाँ पे हर तेज़धार हथियार जो है चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन इनका अटैक आपस में तेज़धार हुआ। मल्टीपल इंजरीज दी गई। मनदीप सिंह और मनमोहन सिंह की जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि तेज़धार हथियार से मल्टीपल इंजरीज दी गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। लेकिन केशव जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि लोकल पुलिस अब इस पे ज़्यादा तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार ये तेज़धार हथियार, शार्प एज्ड वेपन्स अंदर पहुंचे कैसे, इनके अटैक का कारण क्या रहा। क्योंकि पहले ये लोग एक ही गैंग को बिलोंग करते थे। एक ही गैंग के कहने पे, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग के कहने पे इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। उस हत्या के आरोपी हैं ये, वो साजिश में शामिल थे, जिसमें तीन ग्रुप शामिल थे। एक ग्रुप केशव, मनमोहन और मनदीप सिंह, ये तीनों एक ही ग्रुप के थे। और अब इनका आपस में क्लैश हुआ क्यों, आखिरकार कारण क्या था, इस सारी चीज़ की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जेल के अंदर भी गैंग वॉर होती है और गैंग वॉर में 2 लोग मारे जाते हैं, और तेज़ धार हथियार कैसे पहुंचते हैं, शार्प एज वेपन जो हैं वो कैसे पहुंचते हैं जेल के अंदर, ये भी एक बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर बाहर में तो सवाल खड़े थे ही, लेकिन अब जेल के अंदर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पंजाब में हो क्या रहा है। जी दीप्ति। All right, Amandeep, like you said, multiple questions, not just how weapons were easily accessible to these gangsters, also because both of them, remember, both the people who've died, these gangsters, were actually accused in the Siddhu Moosewala murder case. So is there more to this case than what meets the eye? We'll let you go and get more reactions on that. For the moment, I thank you as we also quickly head into a break. Right now, on the other side, we are also putting our focus on more trouble for the Aam Aadmi Party, where a story brewing in from the national capital. The questioning of Manish Sisodia continues for the last many hours. Also, the BJP is setting the record straight, telling the Aam Aadmi Party to face the law instead of crying foul. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्टेड विदिन 15 days or the earliest. You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना, इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada, and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi. जी.
ऑफ इंडियन हेरिटेज, बॉर्न इन पॉलिटिकल पाकिस्तान। जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। क्या खालिस्तानी सरकार है? पंजाब में क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान मान मिस्टर वन, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। Let's get you a quick check of other stories we are tracking at this hour in brief. Film producer Kareem Morani is being questioned by the ED in connection with the Sukesh Chandra case. This is coming 2 days after a Delhi court extended his custody by 3 days in connection with a money laundering case. The Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann has said that Khalistan supporters were getting funding from Pakistan and other countries amidst the ongoing turmoil in his state surrounding the recent activities of the Khalistani sympathizer Amritpal Singh and his supporters. ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते? पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा। पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। In the backdrop of Punjab's Sajnala incident, the former Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh has said, and I quote him now, "The law and order has deteriorated in the state of Punjab." He says, "The law and order is not a centre subject, but if the Punjab government is not able to handle it," he says, "the centre will have to step in." He also goes on to say that there are drones being spotted almost every day and alleges that the Chief Minister is not interested in what's happening in the state. एक ही चीज़ है, कानूनी व्यवस्था तोड़ी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई समझ नहीं रहा, कानून कोई समझ नहीं रहा, जैसे जी करता है करी जा रहे हैं। अब ये तरीका क्या है? अगर किसी को पुलिस ने गलत पकड़ा है तो फिर कोर्ट में जाओ। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून है इसमें। ये कैसे कि आप जाके अजनाले के पुलिस स्टेशन में आप हमला बोलो, पुलिस वालों को जख्मी करो, और वहाँ सबसे बड़ी बात, मेरा क्या कोई सिख को पसंद नहीं होगा कि आप गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहाँ कर दो। तो ये बहुत बुरी बातें हो रही हैं यहाँ, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, और ये अमृतपाल तो इतिहास को कोट करता रहता है, उसको मालूम नहीं कि क्या हुआ है पंजाब में। 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1900 पुलिस वाले मरे हैं। तो क्या फिर बिगाड़ करना चाहते हैं इधर? To Haryana now, where the government has suspended internet and SMS services in the New district over the Bhiwani murders. Internet remains suspended starting at 10 a.m. on the 26th of Feb till the midnight of the 28th of February. The decision has been taken to stop fake and false information that agencies believe can create communal tensions. This as the protests continue in New following the twin murders in Bhiwani. On the second day of his India visit, the German Chancellor arrived in Bengaluru today on a one-day visit. This is the first standalone visit to India by any German Chancellor since the inception of the IGC mechanism between the two countries that started in 2011. He was earlier received by the Karnataka Health Minister. The Indian Air Force provided the facility of IL-76 aircraft, which airlifted about 388 citizens out of Ladakh from Jammu to Leh
Under the Operation Sadbhavna, the Indian Air Force has been extending assistance to the citizens of Jammu and Kashmir and the Ladakh region. 2 IL-76 aircrafts landed at the Air Force Station in Jammu and it airlifted the citizens from Jammu to Leh. To Kerala now, where the Air Intelligence Unit of the Customs Department has arrested one person from the Kochi airport, seizing about 1300 grams of gold that's worth about 53 lakhs. This was concealed inside his body. The accused was identified as Faisal, a native of the Mallapuram district, and investigations are underway. Let's shift our focus now to get you more details of what's been happening in Sri Lanka, where remember there has been sporadic protests that we see of late. This is the National People Power Party that staged a massive protest earlier in Colombo, where a protest march was held by the party demanding elections. Roads continue to remain blocked, as you can see on your screens there on the left. The police later also resorted to firing tear gas and water cannons to disperse the protesters. We are heading into a break right now on the other side. The CBI heat on Manish Sisodia intensifying. Drilling is underway as the showdown continues in the national capital. खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप कहते हैं आपने राजनीति छोड़ दी। मेरा काम जिस उद्देश्य के लिए जीवन में आया हूँ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो करता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, अच्छा छप रहा है कि बुरा छप रहा है। आपको एक लेटर दिया गया था अघाड़ी सरकार द्वारा, जो आपने पब्लिक कर दिया, जिसमें आपको ऐसा बताया गया कि आपको थ्रेटन किया गया था उस समय। आप 5 पेज का कानूनी नोटिस जैसा बना के भेजे हो और अंत में लिखते हो कि एक्सेप्ट इट विदिन 15 days or the earliest. You can't dictate governor. So it was so nasty. Do you think that I should have accepted that letter? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। He told you he's a threat to internal security. Why to brandish weapon? Why it's the need of weapon when you are claiming that it's a peaceful procession which you will be carrying out? No peace can be established without weapons. Why don't governments and the state and everybody, army, they just dismiss all the armies, all the weapons, dispose everything, and then ask us why do we have weapons? For 3 months, center and state didn't act. Now Khalistani Amritpal is on a rampage. Anarchy in Punjab, story broken on Republic. जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में, पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, इसने तो उनको दे दिया ना, इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना, तो क्या गलती हो गई। Originally you're from Pakistan. How was the journey from Pakistan to Canada and why was this journey from Pakistan to Canada? I'm a Canadian Punjabi जी. of Indian heritage, जी.
बॉर्न इन पॉलिटिकल पाकिस्तान। जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ और ज्यादा आना चाहता हूँ। खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान? मिस्टर वन, विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी? पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? There was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. So I'm not. Manish Sisodia is now reached. We are getting the live picture. Sir, what do you have to say? आप यहाँ पहुँचे हैं सर, आप you are facing serious allegations. Serious allegations आप face कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। सर नीचे कर दो, कहना चाहेंगे सर आप? नीचे कर दो मनीष। See the picture of Manish is now reaching here at CBI headquarters. Hello and welcome. You're watching a special broadcast of This Is Exclusive. We are coming to you live from the National Capital outside the Central Bureau of Investigation headquarters, where the Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, is now being questioned in the liquor scam. Over the next couple of minutes, we'll take you through the breaking news as to what's really happening in the questioning as far as the liquor scam is concerned, and also reporters getting you details of what's brewing in the Aam Aadmi Party camp, as they say that Manish Sisodia will be arrested. The claim that has been made by the Aam Aadmi Party. All this and much more on this edition of This Is Exclusive. But up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. आप यहाँ पहुँचे हैं सर, आप CBI heat on Sisodia intensifies grilling underway as CBI heat on Sisodia intensifies grilling underway as showdown continues in the national capital. मैं केंद्र सरकार की सारी एजेंसी से ये पूछना चाहती हूँ, कहां गए ये 10,000 करोड़ रुपए अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है?
Kejriwal's deputy Sisodia's grilling underway, but Aam Aadmi Party continues to cry a vendetta.